यो व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल तुम सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक। मैं हूँ तुम लोग का फेवरेट यूट्यूबर। आज यहाँ पे हम आ चुके हैं वीनस को टेराफॉर्म करने के लिए। हाँ, मेरे बाइसेप्स कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए, मेरे को पता है। को पता नहीं भाई, वर्कआउट वीडियो भी आएगी सुन। लुक्स मैक्सिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ज़रूर हम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन मेरे को उससे एक चीज़ और याद है कि भाई लुक्स मैक्सिंग एक एज इन वही है ऑलमोस्ट कि तुम हेल्दी रहो, अपनी टेक केयर करो, एंटी एजिंग, एंड तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग हो गई। वही है लिटरली लुक्स मैक्सिंग, एंड बाकी सब कुछ फालतू फालतू चीज़ें हैं। हम क्योंकि भाई तुम मतलब हम आगे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे बायो इंजीनियरिंग के थ्रू, तो मतलब जेनेटिक्स का पैदा होने का फ़ायदा है। लेकिन क्या फ़ायदा है अगर तुम उसको चेंज ही कर सकते हो तो लेकिन वो इतनी जल्दी भी नहीं होने वाले हैं। एंड काफ़ी फिर भी काफ़ी अच्छे एडवांटेज, अच्छे जेनेटिक्स ढूंढो गाइस। बुम। हाँ, तो हम लोग क्या बात लगे थे वो करने। हाँ, वीनस को टेराफॉर्म करने वाले और वीनस को टेराफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हें तुम्हें जैसे पता होगा वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम के। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी थिक है, एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एंड सिंस वहाँ पे ढेर सारी ग्रीन हाउस गैस हैं, एंड उसकी वजह से वहाँ पे ढेर सारा मतलब गर्मी हो जाती है। एंड वो 117 मतलब या फिर कुछ इतना ही वो लगता है दिन, मतलब उसको रोटेट करने के लिए। तो उसकी वजह से एक साइड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो दूसरा ठंडा हो जाता है। दो साइड भी इतना ठंडा नहीं होती क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना थिक है। ऊपर से वहाँ पे विंड की स्पीड एंड एटमॉस्फेयर भी इतना बड़ी थिक है, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड ऊपर से उसकी रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे कुछ ये दो मेजर प्रॉब्लम्स है, बाकी तो भाई वीनस बेस्ट प्लानट है भाई। लेकिन किस्मत देखो भाई, तुम अब हमारी देखो। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दो प्लानट ऐसे जो कि मतलब थोड़े ढंग के, एक मार्स एक वीनस है। मार्स इतना छोटा है कि भाई उसमें एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, मतलब एटमॉस्फेयर उस पर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा भाई। मार्स मेरा मानना है कि मतलब पहले भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तुम देखो तो उसके फॉसिल्स मिल सकते हैं उसके आइस कैप्स के ऊपर। मेरा तो यही मानना है भाई, शर्त लगा लो $500 की। मैं हारा तो भाई मेरे को $500 तुम मत देना, और मैं जीतता हूँ तब मेरे को दे देना, ठीक है। तो जो भी, हाँ तो क्या बोलता मैं, हाँ तो मार्स के अंदर मेरा मानना है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तुम्हें फॉसिल्स क्या मतलब जमे हुए मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर जब हम जाएंगे मार्स में तो हम देख लेना तुम लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम था लाइफ के पास ग्रो होने के लिए। एंड उतना टाइम के अंदर मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए उनको उधर डेवलप। तो फिर उसका एटमॉस्फेयर उड़ गया उनका, फिर वो लोग टपक गए, जो लोग बच गए वो पानी के अंदर जम गए, और वो उधर ही आज भी मेरे हिसाब से तो ये मानना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मार्स बहुत ज़्यादा छोटा है कि वो एटमॉस्फेयर अपना होल्ड कर सके, ठीक है। एंड दूसरी बात, वो इतना छोटा है कि मतलब वो अपने आप को गर्म भी नहीं रख पाता है। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। एंड मतलब कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेकिन अभी की करंट साइज क्या है, अभी तक उतनी जो हमारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुकी है, हम लोग ईजिली मार्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें अच्छा सा बजट दिया जाए तो। इलॉन मस्क चाहे तो भाई वो कल ही नहीं लेकिन 5 साल के अंदर मार्स पे चला जाए एंड उधर रह भी ले, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत दिक्कतें टाइम के साथ ही हो सकती है, ठीक। लेकिन इलोन मस्क चाहे तो भाई पूरा पैसा उड़ा के कर सकता है वो, ये बंदा, ये चीज़ उसको भी है पता। लेकिन वो कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो बर्बाद नहीं होना चाहता है। वो ट्विटर खरीदने के लिए उसको 4 बिलियन चाहिए थे, तो उसके लिए इतना झंझट हो गया। तो इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर होती नहीं कि वो एकदम से बेचो पैसा आया वो चल जाए, ठीक है। तो मतलब वो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन उसको छोड़ो। लेकिन और दूसरा प्लानट है वीनस। वीनस का एटमॉस्फेयर इतना भाई वो हो गया थिक, और फिर भाई वो हॉटेस्ट प्लानट हो गया, ऊपर से भाई वो उसकी रोटेशन बड़ी स्लो हो गई है। तो हमारी किस्मत अर्थ पे थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन आसपास के प्लैनेट्स पे हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब हो गई। मार्स वीनस पे थोड़ी अच्छी होती तो भाई आज तुम्हारा वे इंटरगैलेक्टिक सिक्स वाले सपने भी पूरे हो जाते, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई अगर वीनस पे लाइफ फॉर्म होती तो वो बिल्कुल नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती अर्थ के लाइफ फॉर्म की तरह, कि अगर सब कुछ सेम होता तो। लेकिन हम एटमॉस्फेयर चीज़ें अलग अलग होती है तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ तो यही होती है, मतलब
एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई के क्रोमोसोम, अब तुम समझ रहे हो कि मैं मतलब क्या चीज़ें के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें वहाँ पे सेम ही होती एंड तो वीनस बेस्ट चॉइस है क्योंकि उसका ऑलमोस्ट सेम ही है अर्थ के साथ, उसका डायमीटर एंड सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। डायमीटर ऑफ वीनस तो मैं तुम्हें ऑब्वियसली डायमीटर ऑफ वीनस About 7,521 miles. According to Astronomy बारह magazine, हजार एक सौ size. चार किलोमीटर डायमीटर ऑफ अर्थ According to Imagine the Universe, ऑलमोस्ट सेम ही NASA, है। the diameter of मास ऑफ वीनस 4.87 trillion kilograms. मास ऑफ अर्थ According to Wikipedia, थोड़ा सा and Earth अर्थ का mass ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे तुम जैसे कि देख पा रहे हो कि मतलब यहाँ पे अर्थ का मास हल्का सा ज़्यादा है, मार्स का तो आधा ही है ऑलमोस्ट। देखो भाई कहाँ छः, अरे मार्स का वेट इतना है। रुको एक मिनट भाई, अगर देखो इसका भाई इतना किलोग्राम है ना, तो मार्स का निकाल लेते। मार्स वेट according to space.com, mass is 6.42 times 10 to the 23 ट्वेंटी kilograms, थ्री है about भाई, 10 times less than Earth. ये This affects the force ट्वेंटी of फोर है, gravity. और ये Gravity on वाला भी Mars is ट्वेंटी 38% फोर of है। Earth's gravity, so a तो 100-pound person on Earth would यहाँ पे मार्स अर्थ और वीनस तीनों मतलब सेम ही टाइप के पत्थरों से बने हुए, और मरक्यूरी भी तुम बोल सकते हो। अगला प्लैनेट को तो मरक्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर। आगे तो जुपिटर वो तो बड़े दूर है भाई, फिर वो गैस गैस के प्लैनेट आ गए, ठीक है। लेकिन जो भी ये चुटकू मुटकू प्लैनेट है ना, ये सारे के सारे सेम ही टाइप के मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो हम चार ही बन पाए, एक तो कुछ ज़्यादा करीब सन के, उसको तो छोड़ ही जाओ। वो क्या बोलते हैं, एक जोन, गोल्ड लिक जोन, या जो भी जोन बोलते हैं, उससे बड़ा ही दूर है। तो इसको छोड़ो, तो ये वीनस अर्थ और मार्स ही है ना। मार्स का भाई मार्स छोटा हो गया तो भाई वो थोड़ी दिक्कत वाली हो गई बात है ना। लेकिन फिर अर्थ आ गया अपना, अर्थ पे भाई किस्मत चमक गई अपनी, और ऐसा हो गया। फिर वीनस की बात आती है, तो भाई वीनस के अंदर एक समय भाई इस कवर को खोल देता हूँ। ये साला माइक्रोफोन दबा देता है मेरा, तो उसकी वजह से तुम्हें ऑडियो ख़राब आती है। अब वो प्रॉपरली अच्छी आवाज़ आ रही होगी। दूसरा वाला लगा ले तो जो भी दबा तो देता है, लेकिन फिर भी थोड़ी ठीक ठाक ही आ जाती है मेरे हिसाब से। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ फिर विनस का थोड़ा भाई किस्मत ख़राब हो गई, उसकी रोटेशन स्लो हो गई है, तो मतलब थोड़ी किस्मत ख़राब है, लेकिन जो भी ठीक है। तो मैं कुछ यार अब लगा तो बोलने यार, एक तो साला कवर चेंज करने के चक्कर में भूल गया। तो अब क्या बात थी, एक सेकंड जरा मैं पॉज कर देता, फिर याद आएगा तो बोलता। डोंट नो भाई क्या बात थी, अगर मैं इस वीडियो को अगर मैं यहाँ पे पॉज कर दूँ एंड फिर रुको, मैं ना इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ ना, फिर इस वीडियो को मैं देखता हूँ, फिर इसी मोबाइल के अंदर मैं अगली वीडियो को डायरेक्ट ही इनबिल्ट एडिटर के अंदर डाल दूँगा, फिर वो एक साथ जुड़ जाएगी फटाफट। तो मेरे को एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक क्षण मैं इसे रोक देता हूँ। हाँ तो भाई पता नहीं क्या बात है, ठीक है, उस बात को छोड़ो। तो यहाँ पे बंदा है यूट्यूब पे जो कि मेरे को मिला, इसका नाम है एंटोन पर्तरो पेट्रो। तो ये बंदा है, इसकी स्माइल अच्छी, तो मेरे को इसकी स्माइल वो लगी अच्छी, इसलिए आज हम लोग इसकी ये वाली वीडियो देखने वाले हैं, जो कि इसने यहाँ पे कुछ 6 साल पहले डाली थी। एंड तुम्हें लग रहा होगा मेरा भाई लेंस क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि भाई ये इसके अंदर पता नहीं कुछ दिक्कत है कि भाई ये मतलब 4K के अंदर इसका लेंस नहीं चेंज हो रहा अभी, तो उस चीज़ को छोड़ो। तो अभी हम इसकी वीडियो यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड फिर हम लोग इसके ऊपर वो करेंगे बात, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी इसकी ये वाली पहले भी, मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर करूँ, तुम्हें भी अच्छी लगे। एंड मतलब मैं लिंक पे दे सकता था लेकिन फिर मैं अपने विचार के कैसे बताता इसकी वीडियो के बाद मैंने सोचा साथ साथ में देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। The beautiful neighbor that we have right here, also known as Venus. Now this is often ignored. हाँ, और एक बात और कि मैं क्यों करना चाहता हूँ वीनस को टेराफॉर्मिंग, क्योंकि भाई सुनने में भाई कूल लगता है भाई, वीनस को फास्ट, सॉरी, हु मेड वीनस स्पिन फास्टर, मी तो ऐसे मतलब सुनने में कूल लगता है वो, जैसे जो
नेपोलियन बोलता है तुमने अगर सोना नहीं होगा तो मैं तो बता देता। अरे ये तो भाई मैं गलत चीज़ देख गए तुम सबको भाई, पढ़ना मत। हु बर्न्ड द मॉस्को? नेपोलियन। अरे मैं बर्न्ड बोल रहा हूँ यार, इसको वन सुना दे रहा है। फिर बोलते हैं भाई फैमिली से। चलो मैंने मान लिया भाई, मेरी प्रोनाउंसिएशन में होगी प्रॉब्लम। What's the capital of France? Paris, Russia. Petersburg, and Moscow before. Who burned Moscow to the ground? I don't know, sir. I did. बस भाई ये वाली फीलिंग है भाई। Who made the Venus spin faster? I didn't। मतलब ऐसा मैं ऐसे नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भाई सुपरमैन बनूंगा और उसको मैं जाके वो कर दूँ फास्ट, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की वजह से उधर मतलब इम्प्रूवमेंट हो और हम फिर उधर जाएं। तो बस हाँ भाई, ये वाली मूवी मैंने उधर देखी थी, क्या बोलते हैं उसे, हाँ यूएई में। कोई चोमो इंसान था मेरे आसपास बैठा हुआ, ज़्यादा बकबक करता है इनका लड़ा। हाँ चलो उसको छोड़ो भाई, तुम आगे आ जाओ। In most scientific discussions and also most sci-fi movies don't really talk about terraforming Venus as much as they do Mars. But we're going to focus on this because I personally think this is probably the best place for humanity to potentially call home in the future. Anyway, welcome to What the Math. वही मेरे हिसाब से भी मतलब बेस्ट प्लानट है, क्योंकि मतलब इधर की ग्रेविटी भी सेम है ऑलमोस्ट, एंड मतलब सब कुछ ही सेम है। मास भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तुमने जैसे कि देखा डायमीटर भी सेम ही है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो हमें कुछ ऐसा मतलब फिजिकली हमारे ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी, जो कि मतलब और प्लैनेट्स में जाके हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी कम होगी। मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और आंडू पांडू चीज़ें हो जाएंगी अपने बॉडी हाथ। तो वीनस पे वाली चीज़ें नहीं होंगी शायद से, तो उसकी वजह से। In the previous part, we actually एंड भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, सैमसंग की वीडियो क्वालिटी बहुत हैगी हुई है, इसलिए तुम्हें इतना हैगा हुआ आता है भाई। मजाक नहीं भाई, आईफोन भाई लिटरली भाई मॉक्स भाई वीडियो क्वालिटी के अंदर। ये पता नहीं आवाज़ कैसी आती है ना, लेकिन जो भी मतलब तुम इसकी अच्छा तुम्हें इसकी स्क्रीन भी तो वीडियो के अंदर ही आ रही होगी, लॉल। भाई मजाक नहीं भाई, ये लिटरली मॉक्स। मेरे पास वैसे पिक्सल भी, लेकिन वो मैंने पापा को वो कर दी गिफ्ट, तो मैंने इतना चलाया नहीं वो वाला। अपना लूँगा तो मैं कर दूँगा शायद से, रुको एक मिनट देख लेते। पिक्सल 9 प्रो रिलीज डेट भाई, एक तो ये आ नहीं रहा यार, एक तो जल्दी ना, वरना ले लेता मैं। और पिक्सल 8 मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पिक्सल 9 का तुम डिज़ाइन देखो यार, क्या डिज़ाइन है भाई। मज़े आ गया भाई देख के, मेरे को तो यही लेना है भाई, अगर मैं लूँगा पिक्सल अपने लिए तो भाई मेरे को लेना तो मेरे को यही है ना 9 प्रो, क्योंकि 8 प्रो तो मैं लेने नहीं वाला, क्योंकि मेरे को क्योंकि 9 में का डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये आ कब रहा है भाई रिलीज डेट, तो उसकी वीडियो क्वालिटी होपफुली अच्छी है भाई इनकी भाई। बस पता नहीं भाई क्यों नहीं करते हैं ये लोग इतना फोकस। तुम भाई ऐसा फोकस करो ना अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई तुम अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये बोलो कि भाई हमारा फ़ोन ऐसे आए, सारे फ़ोन्स को सारी चीज़ों के अंदर वो कर देता मोड, है ना भाई। भाई मैं तो यही करता भाई, इतना पैसा तुम पे कर दो ऐसा। तो कोई बात नहीं भाई, इन्होंने नहीं करना, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। तुम भाई डिज़ाइन देखो यार, कितना प्यारा डिज़ाइन है। तुम्हें नहीं लग रहा अच्छा ना, तो तुम चूती हो। चलो इस चीज़ को छोड़ो, आगे चलते हैं। part, we actually talked about changing the atmosphere of Venus, and we also talked about various chemical techniques and other scientific techniques we can use to try to basically remove the vast majority of atmosphere here, exposing the surface of Venus. If you do want to know more about it, watch the previous. एक अच्छा ये पार्ट 2 हम पार्ट 1 भी देखेंगे शायद, या फिर नहीं देखेंगे, वो चीज़ बाद में देखेंगे। तो हम मैं ज़रा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हल्का फुल्का हीट भी मार रहा है। अलेक्सा AC 20। It's
set to auto. Alexa, AC 20. Auto set to 20. हो गया हे हे। Yeah, but here we're actually going to be talking about something different. Venus has another problem for us, and this is actually something that we need to fix for us to create a terrestrial planet with habitable conditions. Venus has very slow spin. So let me just actually remove this for a second. It spins extremely slow. A single day on Venus is equivalent to approximately 243 days on Earth. Because of this, 240 अच्छा हाँ 243 मतलब वीनस का एक साइड ना मतलब एक दिन कब होता है एक दिन कंप्लीट तब होता है जब जो तुम मतलब क्या बोलते हैं उसे कि रात से दिन हो और दोबारा से रात हो के दिन हो जाए उसको बोलते हैं एक दिन मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। अर्थ पे ऐसा नहीं होता वो ऐसा क्यों नहीं होता वो मेरे को नहीं पता लेकिन अर्थ पे भी वैसे ऐसे ही होता शायद वो 12 मतलब हाँ भाई धूप तो मतलब ऐसे ही होती है। हाँ धूप तो भाई 12 घंटे ही होती है आई गेस 12 घंटे भी नहीं होती। एक सेकंड को है 8 बजे है ना तो रात के 8 बजे देखो सुबह के 8 बजे की धूप होती है तो रात के शाम के 12 बजे धूप हट जाती है फिर अगले दिन सुबह 8 बजे धूप आ जाती है। हाँ तो मतलब ऐसे मान लो हाँ आज पे भी ऐसा ही होता है। हाँ तो मतलब 12 घंटे 117 दिन एक साइड मतलब 117 दिन धूप रहती है और 117 दिन रात रहती है तो एक रोटेशन कंप्लीट होती है मतलब वीनस का एक दिन अर्थ के इतने दिनों के बराबर है। 143 days on Earth. Because of this, there are two problems. One is that a single side is exposed to the solar radiation for about basically over 100 days, and then the other side is exposed to the dark side for over 100 days. On the other hand, except for this, there's also a problem of magnetosphere or magnetic field. The magnetosphere on Venus is non-existent, even though it does seem to have relatively similar composition to the composition of Earth. As a matter of fact, its density and its parameters are very similar, so we would expect this to have magnetic field. And we think it doesn't exist because it just doesn't spin fast enough. मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ क्या होता है भाई? What will happen if what अरे यार अबे भाई इतना स्लो क्यों है यार ये? Had magnetic field. I found it would not be possible as the solar wind was. अच्छा अबे तो भाई अगर इसकी वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो इसका एटमॉस्फेयर क्यों नहीं उड़ता है भाई? क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर तो ऐसे ही इतना ठीक है भाई उड़ जाए थोड़ा तो अच्छा रहे। Charge solar particle would bomb the planet, putting increase human. अच्छा समझा भाई। अगर वीनस पे ना अगर थोड़ा एटमॉस्फेयर वो होता कम ठीक है और क्या बोलते हैं अगर वीनस पे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम होता है एंड टेम्परेचर थोड़ा सा नहीं और वाटर वगैरह होता है और अर्थ लाइक होते हैं तो इधर के जो लोग होते हैं ना वो मेरे हिसाब से अडेप्टेड होते हैं निग्गा होते हैं मतलब डार्कर कलर होता है उनका। रुको अगर डार्कर कलर होता तो एब्जॉर्ब कर लेते सनलाइट का ना तो डार्कर कलर क्यों होता है भाई? इंसान जो धूप वाले एरिया में होता है। अच्छा क्योंकि वो समझ याद आ गया मेरे को क्योंकि डार्क कलर होगा तो वो
रुको एक मिनट। हाँ भाई, डार्क कलर होता तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना ज़्यादा। अगला अच्छा क्वेश्चन है भाई। वाई डू, मेरे को लगता था मेरे को इसका आंसर पता है, लेकिन मेरे को आज याद नहीं आ रहा, या फिर मेरे को नहीं था पता। वाई डू पीपल नियर इक्वेटर आर मोर ब्लैक। मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था कि डार्क कलर क्यों है, ऐसा नहीं है। मतलब क्यों क्यों डार्क कलर के होते हैं। पीपल नियर इक्वेटर टेंड टू हैव डार्कर स्किन बिकॉज natural skin which was adapted skin pigment in an UV could receive much more UVR than area further from the equator. So people near the equator have more melanin in the skin to protect it from UV damage. Makes skin appear brown and black. Contrast people from further from the equator have less melanin and lighter skin to protect vitamin photosynthesis. अच्छा, मतलब समझ गया मैं। हाँ, क्योंकि यू 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 यूवी रेज से शायद से बचने के लिए ज़्यादा मेलेटोनिन बनता है एंड वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे कलर का सीन नहीं है, लेकिन हाँ, तो मतलब ये मार्स के लोग भी मतलब ब्लैक होते हैं और इंडिया में नहीं। मतलब अर्थ पे फिर इनके खिलाफ भी भाई रेसिज्म शुरू हो जाता है वीनस के खिलाफ, क्योंकि ये तो भाई और ज़्यादा क्लोज है मतलब सन के। So, if we can somehow accelerate Venus and make हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी है नहीं तो इसका एटमॉस्फेयर उड़ता क्यों नहीं है सोलर फ्लेयर से। ये चीज़ का वो करनी थी सर्च। एंड बाय द वे गरीबों, सालों, ये देखो फ्लेक्स फ्लेक्स, चलो मेरी सक्सेस। लेकिन चलो अगला अगला क्वेश्चन। हेलो, अच्छा भाई, चल रहा है। ये नहीं चल रहा है यार, इसकी अति की तैसी। अबे यार, ये मेरा दिमाग वो अलग करता है खराब। If Venus doesn't have a magnetic field, why doesn't solar flare strip away its atmosphere? अरे यार रुक जाता है, एटमॉस्फेयर तो बोल देता। Interaction magnetic, but it does have an induced magnetic field. अबे यार भैंस, ये क्या बकचोदी है भाई। Interaction between Venus thick atmosphere and solar wind create an ion that separates the atmosphere from outer space and the solar winds. भाई अब ये क्या होता है भाई। Venus intrinsic magnetic field but induced magnetic field। इंट्रेंसिक मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेट। भाई मैं भाई फिज़िक्स नहीं पढ़ी है इतनी, क्योंकि मैं अनपढ़ इंसान हूँ भाई। अनपढ़ हूँ भाई तभी पैसा कमा पाता हूँ, पढ़ा लिखा तो शायद और कमाता। इंट्रेंसिक मैग्नेटिक फील्ड, मैं बस ऐसे ही हूँ एक नॉर्मल बंदा, उसको बस थोड़े बहुत डाउट्स हैं, मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। इंट्रेंसिक मैग्नेटिक फील्ड, field meaning and ANING and ये तो भाई इधर कॉपी पेस्ट भी नहीं होता ना, क्या ये। हाँ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन। यार मेरे को बिटवीन की स्पेलिंग भी नहीं आती है। BETWW, हाँ मिल गया। बिटवीन इंड्यूस है ना, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस। मैं चाहूँ तो मैं ऐसे पॉज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम लोग भी देख ही लो कि मैं क्या कहते हैं सीखता हूँ। मतलब कुछ वैसे तुम्हें वैसे मुझसे ज़्यादा आता होगा क्योंकि तुम भाई पढ़े लिखे लोग, पर भाई अनपढ़ लोग, हमें क्या पता। यहाँ पे इंट्रेंसिक मैग्नेटिक रेफर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय
permanent magnetic effect was ferromagnetic material. तो आई गेस जो ferromagnetic material होता है वो एज इन आयरन होता है. The magnetic field exists inherently within material due to alignment of its atomic molecular magnetic movement. On the other hand, induced magnetic field is created when a material that is not initially magnetic. When it is placed in external magnetic field, this induced field arises from alignment of material movement from the external magnetic field. Once the external field is removed, the induced magnetic field usually disappear. अच्छा तो मतलब सोलर फ्लेयर से बन जाती है आई गेस इसका आयोनाइज लेयर. अच्छा समझ गया भाई मैं. भाई ऐसे नहीं मतलब बस थोड़ा सा और फ्लेक्स मारना चाह रहा था. जो भाई थोड़ा सा और फ्लेक्स ले लो तुम. ठीक है भाई इधर से थोड़ा सा और ले लो. ठीक है भाई इतना ठीक रहेगा. तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. मुझे पता अभी 1 मिनट की वीडियो बनी हुई है 2 मिनट की होगी और यहाँ पे वीडियो आधे घंटे लंबी होगी. तो मेरे को पता है मेरे साथ तुम वीडियो देखते तब ऐसा ही होता है. 10 मिनट की वीडियो होती है और 4 घंटे लग जाते हैं उसको देखने में. Spin faster, you would probably expect things here to look a lot more Earth-like. Now, one of the reasons it's actually spinning so fast is because of its thick atmosphere. We think that over the billions of years, the atmospheric pressure here, simply due to drag, made Venus slow down and spin to the point where it's barely even moving at all. So there's several solutions to this problem. But even before I start talking about solutions, this is probably the most scientifically unachievable task right now, because removing the atmosphere is one thing, but making Venus spin faster would require quite a lot of energy. As a matter of fact, current estimates stand at approximately 50 billion petawatt hours of energy, which is approximately 1 billion times less than the entire world on Earth uses in a single year. As a matter of fact, if we were to run every single generator, TV set, computer, and PlayStation on Earth for about 1 billion years, this is how much energy we would require to basically accelerate the rotation of Venus to that of Earth. On the other hand, this is also the same amount of energy that our sun, which is right there in the distance, produces in about 10 minutes. So, on one side, it's देख रहे हो भाई स्वैग है भाई. तुम्हारे 1 बिलियन साल की कमाई भाई 10 मिनट में उड़ा देता हूँ मैं. kind of a lot of energy, but on the other side, we actually do have a generator right there that can potentially create enough energy to make Venus spin faster. Now, one of the first techniques we're going to discuss here is relatively obvious. So here we're actually going to just take a look at our current rotations, 243 days. The more obvious technique is basically colliding things with Venus and basically colliding them with the side where it would actually kind of increase the rotation. भाई स्लो क्यों कर रहे हैं इसे? Okay, that actually decreased the rotation. 246 days. I put it on the wrong side. Let's try it again. Here, we're using Palace to basically try to increase the rotation speed on it. With भाई one मून single फेंकेंगे collision, इसके it ऊपर actually अपन. already improved it by a third. जोक So मारो मैं here we have वैसे. 72 days rotation speed. On the other hand, what you could actually do, and this is a little bit more realistic than just colliding things with Venus, is to launch thousands of smaller asteroids, basically redirect smaller asteroids, and make them move really, really fast and basically fly by Venus instead of colliding with Venus. भाई अगर हम लोग ऐसा कर सकते तो उसको हम फ्लाई बाय क्यों करेंगे? उसको भाई टकरा ही दो है ना. मतलब देखो भाई वीनस का एटमॉस्फेयर ऐसे ही गो है. थोड़ा सा और गो हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा भाई. पता चले कि भाई जो टकराव हुआ उससे भाई वो मतलब क्या बोलते को कुछ मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक है. मैं अनपढ़ इंसान हूँ जो कि मैंने पहले बताया. मेरे को कुछ नहीं पता. तुम भाई पढ़े लिखे बंदे तुम्हें पता होगा. तो हो सकता है कि उसमें से भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलें जो कि इधर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें एंड फिर वो कुछ और बन जाए. जो कि मैंने सर्च किया था तो मेरे को पता चला था कुछ और चीज़ें भी बन जाती जो कि मेरे को अभी याद नहीं लेकिन होता है. तो तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तुम्हें पता होगा. तो मैं उन चीज़ों की वो कर रहा हूँ बात. So here,
with this every single flyby, एंड प्लस उससे हमारी एनर्जी भी बचेगी, हमें बार बार इधर उधर नहीं फेंकना पड़ेगा एस्ट्रॉयड, एंड टकराने से स्पीड भी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी. there's going to be an energy transfer between Venus and the object passing next to Venus. And if we do this enough times, we'll actually make Venus spin faster and faster. So here, an object that's relatively massive that passes by Venus relatively close to its surface is actually going to gravitationally influence its rotation, and as long as it passes on the right side, it's going to basically make it spin a little bit faster. So now if I take a look at it again, its rotation will have increased, or I guess decreased, to 17.3 days. So we just gained about 2 days of rotation. Or I guess it basically made it spin a little bit faster. And if you do this thousands of times, you can basically bring this down to approximately 1 day per day. एंड उतना जो मेरे को लगता है कि वीनस पे नहीं, मार्स पे वो छोड़ो मतलब अपने पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन. In other words, you can make it more Earth-like. So that's the solution that's a little bit more realistic than just colliding things with Venus, because redirecting asteroids is not a very impossible task. We think that we are going to be Alexa, AC22 of redirecting asteroids in the next few decades. And so if you do this thousands of times, eventually Venus might actually start spinning faster and faster. On the other hand, if we actually launch several smaller asteroids but make them move way, way faster at several thousands kilometers per second, and that's of course using some sort of ion drive propulsion or something else that will increase their speed constantly, we could then use a lot less objects and also smaller objects, but would probably require some sort of a technology to have constant acceleration of these asteroids toward Venus. So that's basically a second technique, using close pass-bys to slowly accelerate the rotation of Venus. And the last technique I was going to discuss, फिर भाई फ्यूचर के अंदर हमारी जनरेशन, सॉरी वो बच्चों वाली जनरेशन देख रही होगी कि मतलब भाई कितने मतलब वो अपन थे अजीब लोग भाई, और मार्स की ऐसे सॉरी वीनस की ऐसी तैसी फेर दी अपने एस्ट्रॉयड उस पर मार के बंदे पूरे भाई पूरे इक्वेटर पे देखो, ये देखो पत्थर ही वो है, पत्थर ही पत्थर. is or would require something to be installed on the surface of Venus first. And here we're talking about the so-called mass drivers. These are basically this is ये वाला सबसे अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से. ये वाली चीज़ पॉसिबल है, मतलब इतना भी पॉसिबल नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक पॉसिबल है. Here's a picture of one. These are very, very large accelerators of matter. And these accelerators can often increase the velocity of something up to about 10%. भाई ये ऐसे एक अर्थ पे भी है वैसे, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, 20 किलोमीटर, और ये चाहिए होगा कुछ 12,000 किलोमीटर लंबा, डायमीटर ऑफ वीनस. About 7,521 हाँ तो मतलब miles. According to 20-30 astronomy हज़ार magazine, चाहिए होगा, size 20-30 हज़ार किलोमीटर लंबा. About 10% of the speed of हो सकता है कि मेरा मैथ भी रॉन्ग है क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन फिर भी. light. So hypothetically, and this is actually still in the realm of science fiction, but we already have some of these on Earth, so we might as well try to find a way to create them on Venus. If you were to install a very, very massive mass driver on the surface of Venus, and then somehow वैसे इस तरीके का जो एक है वो उधर है स्विट्जरलैंड में, use the atmosphere of जो मेरे को Venus to याद है. basically get injected into the mass driver and then get shot out of it at ridiculously fast speeds, we could then maybe use these mass drivers to accelerate the spin of Venus to the point where it's going to spin just as fast as Earth. Now, this technique is definitely science fiction for now, but here's the thing. Not only will this actually make Venus spin faster, but it will also get rid of the huge atmospheric pressure. So you could technically remove all 90 atmospheres of pressure from Venus and at the same time accelerate its rotation.
अगर हम लोग एटमॉस्फेयर को इतनी स्पीड में घुमा सके ना, हम एटमॉस्फेयर को ही पकड़ के उसको घुमाएंगे और उसको इस तरीके से स्पेस के अंदर छोड़ेंगे कि वो सीधा मार्स में चला जाए। जो कि मतलब मेरे को पता है कि एक तीर से दो निशाने वाली हो जाती है बात। लेकिन फिर भी भाई तुम देखो, मार्स में भाई अगर वो चला जाएगा तो वो मतलब मार्स का एटमॉस्फेयर थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जो कि अगर तुम वैसे मार्स को हीट कर दो तब भी हो जाएगा। लेकिन भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो इधर से फेंके तो भाई थोड़ा और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो अगर वो पहुँचे उधर तक तो। लेकिन जो भी, चलो ठीक है। As long as you can create these mass drivers on a एंड तुम्हें पता है अगर हम इसे एकदम अपने ऐसे तो अर्थ थोड़ा इस तरीके से टिल्टेड है, मतलब अर्थ ऐसे घूमती है। अगर हम इसे ऐसे घुमाएंगे ना तो इस वाले उस पर सीज़न नहीं होंगे। हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो इस वाले प्लेनेट पे भी मतलब सीज़न आ जाएंगे। तो ऐसे सीज़न क्यों आते हैं? क्योंकि जब अर्थ वो ऐसे ऐसे घूमती है तो जब वो सन के साइड होती है तो इस साइड वाला ऊपर वाला जो है ना पार्ट, वो ज़्यादा टाइम मतलब उस पर रहता है, तो मतलब वो फिर उधर सर्दी टाइम में हो जाती है और वो दूसरी साइड वाला जो है पार्ट वो गर्मी के टाइम में रहता है। जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो ठीक है। surface. This would potentially solve two problems within just about a year, maybe even less. And as long as we can actually increase the speed of Venus, we can then start thinking about everything else. भाई देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई इंसान को बस ना इनफ टाइम नहीं है जीने के लिए। अगर इंसान लंबा जिए ना तब इंसान ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि भाई देखो, तुम्हारी ड्राइव भाई मर जाती है, तुम भाई सोचते हो हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को होने के लिए वो लगता है भाई टाइम। उतना टाइम में भाई इंसानों की ड्राइव मर जाती है। भाई ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज सेक्रीफाइस करेंगे ताकि उनके मरने के 200 साल के बाद वो वाली चीज़ काम में आ सके। कोई भी नहीं है मेरे साथ, बड़े ज़्यादा कम लोग हैं भाई। मेरी तरह अच्छे अच्छे इंसान है लेकिन काफ़ी कम है मेरी तरह अच्छा इंसान। तो ये प्रॉब्लम है। अगर भाई ये चीज़ इंसान अगर ज़्यादा जिए ना तो वो अपने सेल्फिश उसकी वजह से ऐसी चीज़ें कर देंगे। Including, of course, hopefully reestablishing the magnetosphere here, re-enabling the carbon exchange cycle, and creating something that seems to resemble more Earth-like features and also more Earth-like surface, atmosphere, and pressure. And this is basically, I personally think, one of the more important steps for us. As long as we can make it spin faster, we'll solve a lot of problems. On the other hand, relatively recent studies actually did show that you could potentially have terraformed Venus even without the fast spin. Using a variety of techniques such as, for example, orbital mirrors, you could project मेरी सबसे वो वाली चीज़ नहीं अच्छी। अगली वीडियो एक और मिली है, उसको देख लेते हैं। 2 साल पुरानी है तो ये शायद से probably कुछ नया हो इसके Venus अंदर। is also isothermal, which means that it experiences virtually no variation in temperature. This is due to its dense atmosphere, but also its slow rotation and its low axial tilt. 3 degrees. Why do we spend so much time looking for life on Mars when the red planet has had liquid water for only 400 million years? While here, 2 steps, there is Venus that has hosted oceans for 3 billion years, and no one considers it. Do you think we overlooked a little too much the planet that before the space age was still considered fit for life and perhaps covered by oceans? Since then, for example, NASA has sent 10 orbiters and 10 landers or rovers to Mars, but just 2 orbiters to Venus, and none since 1994. This has not been for lack of scientific interest. Since the mid-1990s, U.S. scientists alone have submitted nearly 30 Venus proposals to NASA. None have been approved. It was during the space race that scientists discovered on Venus a torrid and toxic world. That could explain why interest in Venus dwindled. Scientists quickly realized that this planet would not be a home for future human exploration, nor an outlet on which to search for life. It would be downright difficult to study at all, even for short amounts of time. But the wind is changing, which was due to the controversial finding of phosphine in its atmosphere. Lately, the interest in the twin sister of Earth has been increasing, and NASA has finally approved new exploratory missions.
more and more planetologists are hypothesizing for Venus the possibility of terraforming, even more than Mars. Hard to believe? Well, keep watching. Let's figure it out. Terraforming Venus quickly? Fascinating, but impossible for at least 1,000 years. अच्छा साल है 1000 साल से पहले कर देंगे फिर तो. Like Mars, Venus was once a vastly different place. According to data gathered by various missions, it is believed that until 700 million years ago, Venus was a warm and wet planet where oceans covered 80% of the surface. This is इस बंदे ने बोला था कि मतलब मार्स पे 500 मिलियन सालों से ये पानी. मेरे सबसे गलत थी वो इन्फॉर्मेशन. देखेंगे उसको बाद में. actually close to what scientists thought Venus was like until the Soviet Venera and NASA Mariner probes revealed what a hellish place it is today. This came to an end apparently due to a near global resurfacing event that occurred 500 million years ago, where large amounts of magma bubbled up from the mantle and released massive amounts of CO2 into the atmosphere. This magma would have solidified before reaching the surface and created a barrier preventing the atmospheric CO2 from being reabsorbed by the crust. What followed was a runaway greenhouse effect that caused severe climate change, leading to the hostile environment that we see there today. However, if the planet could be restored to its former self by reversing the greenhouse effect, which is possible, then humanity would have a planet closer to Earth that is roughly equal in size, mass, and gravity. Let's compare. Venus is the closest planet to Earth, ranging from a minimum distance of about 38.2 million kilometers to a maximum of around 261 million kilometers. Because of the nature of our orbits, Earth and Venus make their closest approach every 584 days, 1 year and 7 months, which is known as an inferior conjunction. In contrast, the average distance between Earth and Mars is about 225 million kilometers, ranging from 55.7 million kilometers to 401.3 million kilometers. Our two planets make their closest approach every 26 months, 2 years and 2 months, which is known as an opposition, since the Sun and Mars are on opposite sides of the sky when viewed from Earth. So not only does Venus get closer to Earth than Mars, but it also makes its closest approach to us more often. This means that missions to Venus could launch more often and would take less time to get there. Yes, sir. Then there's the matter of Venus's gravity, which is the equivalent of 90% to what we experience here on Earth. Compare this to Mars, where the gravity is roughly 38% of Earth's. This means that for potential settlers, the health-related risks associated with lower gravity would be much lower. Of course, Venus, as it is today, has its share of challenges that makes the prospect of living there very difficult. These make terraforming not only a good idea, but a potential necessity, assuming people want to live there in large numbers. Otherwise, they will need to be happy living in floating cities among the clouds, an actual possibility. For starters, Venus is the hottest planet in the solar system, with an average surface temperature of 464 degrees Celsius, which is hot enough to melt metals like lead and zinc. The atmosphere is also a toxic fume, composed overwhelmingly of carbon dioxide, with trace amounts of nitrogen, sulfur dioxide, and water vapor. However, unlike Mars, atmospheric pressure on Venus is 90 times the pressure of Earth's atmosphere. To experience that kind of pressure here on Earth, a person would have to venture over 910 meters under the sea. So unless you have a vehicle that can withstand extreme heat and pressure, you're not getting anywhere near the surface. As if that weren't enough, Venus's atmosphere is also permeated by clouds of sulfuric acid rain. These have been observed in Venus's upper atmosphere and may not condense closer to the surface, but spacecraft attempting to land on the surface must first penetrate this acidic shroud. The best prayer to attract wealth begins when you understand that the strongest energy in the universe is not thought, meditation, or even the law of attraction. It's brainwaves, and more specifically, a single brainwave, the same one used by an exclusive group of the wealthiest people. Recent studies show the reason why the law of attraction and meditation do not work for most people is because modern work and life systems. But spacecraft attempting to land on the surface must first penetrate this acidic shroud. Venus also has the slowest rotation period of any major planet, taking roughly 243 Earth days to rotate once on its axis.
On top of that, Venus rotates in the opposite direction as the Sun, retrograde rotation, which is something astronomers have only ever observed with one other planet, Uranus. Between its slow retrograde rotation and the fact that Venus takes close to 225 days to orbit the Sun, a single solar day on Venus lasts 116.75 days. This means that for an observer on the surface of Venus, it takes close to 4 months for the Sun to set and rise again, compared to 24 hours here on Earth. Venus is also isothermal, which means that it experiences virtually no variation in temperature. This is due to its dense atmosphere, but also its slow rotation and its low axial tilt, 3 degrees versus Earth's 23.5 degrees, which essentially means that Venus doesn't experience seasons or anything we might consider a day-night cycle. If you're thinking that this is starting to sound like something out of Dante's Inferno, then you're on the right track. But with the right kind of work, it could be made into something more akin to a tropical island paradise. Hang on a sec before we continue. Be sure to join the Insane Curiosity channel. Click on the bell. You will help us to make products of even higher quality. Luckily, with the right kind of ecological techniques and some serious elbow grease, Venus could be terraformed into an ocean planet with mild temperatures and endless beachfront property. As with Mars, it comes down to 3 major goals. They include reducing the atmospheric pressure, lowering the temperature, converting the atmosphere to something breathable. Much like terraforming Mars, these 3 goals are complementary, even if they are the complete opposite. Luckily for us, Venus has a lot to work with, and the outcome would be easier for humans to adapt to. The first proposed method was made by none other than Carl Sagan in 1961 in a paper titled The Planet Venus. It was in this paper that Sagan argued that seeding the atmosphere of Venus with genetically engineered cyanobacteria could gradually convert atmospheric carbon dioxide to organic molecules. Unfortunately, the subsequent discovery of sulfuric acid clouds and the effects of solar wind made this proposal impractical. It would be another 30 years before another proposal for terraforming Venus was made, which was done by Paul Birch in his 1991 paper, Terraforming Venus Quickly. According to Birch, flooding Venus's atmosphere with hydrogen would trigger a chemical reaction, creating graphite and water. The graphite would be sequestered while the water would fall as rain and cover 80% of the surface in oceans. Another proposal is to use solar shades, something that was recommended by Birch and famed aerospace engineer and space exploration advocate Robert Zubrin. This concept would involve using a series of small reflective spacecraft in Venus's atmosphere to divert sunlight, thereby reducing global temperatures. Alternately, a single large shade could be positioned at the Sun-Venus L1 Lagrangian point to limit the amount of sunlight reaching Venus. This shade would also block solar wind, preventing Venus's atmosphere from being stripped and also shielding the planet from solar radiation. This would trigger global cooling, resulting in the liquefaction or freezing of atmospheric CO2, which would then be deposited on the surface as dry ice, which could be shipped off world or sequestered underground. Another suggestion is to speed up Venus's rotation, which could have the added benefit of generating a planetary magnetic field. There are a number of ways to do this, like striking Venus's surface with large asteroids or using mass drivers or dynamic compression members to impart transfer energy and momentum to the surface. This would allow for the creation of an Earth-like diurnal cycle in Venus's surface with large asteroids or using mass drivers or dynamic compression members to dynamic compression numbers. कहाँ पे गया मेरा दूसरा फोन? मुझे वैसे भाई स्ट्रीमिंग कर देना सीधे से अच्छा था. कंपोनेंट दैट इंक्लूड द कंट्रोल ऑफ स्टेबलाइजेशन. क्या भाई यार ये
consider acceptance, overcoming loss of reflectors, dynamic compression members. A dynamic compression member is a component that includes a control and stabilization system. A canonic dynamic compression member is only neutrally stable. If the reflectors act like mirrors, any angular divergence of the mass streams will be maintained until they are lost to the side. Any misalignment of the mirrors will lead to the same result. कुछ लाइट से रिलेटेड ही होगा आई गेस मेरे को अभी नहीं आया भाई समझ फिर कभी transfer देखेंगे energy and momentum to the surface. This would allow for the creation of an Earth-like diurnal cycle and could also help remove some of Venus's dense atmosphere. Similarly, mass drivers or space elevators could scoop clouds from Venus's atmosphere and eject them into space, gradually thinning it out over time. The end result of this would be a Venus very much like its former self. This would mean a planet covered predominantly by oceans. Due to the nature of Venus's geological features and small variations in elevation, the surface would essentially be a giant archipelago with a few larger continents. Over time, humans could introduce terrestrial organisms like plants, trees, bacteria, and aquatic species to Venus. With some modifications, this could lead to an explosion of life and the development of a tropical planet with biodiverse jungles on the larger landmasses and more coastline than you can shake a stick at. Okay, you may have already figured out what the downside of all of this is. If you guessed that it would take a massive effort to transform Venus, and it would be very challenging to create a settlement there in the meantime, you'd be absolutely right. While Venus could be terraformed to become what it once was, the commitment in time, energy, and resources would be nothing short of Herculean. Beyond the similarities Venus has with Earth in size, mass, and composition, there are numerous differences that would make terraforming and colonizing it a major challenge. For one, reducing the heat and pressure of Venus's atmosphere would require a tremendous amount of energy and resources. It would also require infrastructure that does not yet exist and would be very expensive to build. For instance, it would require immense amounts of metal and advanced materials to build an orbital shade large enough to cool Venus's atmosphere to the point that its greenhouse effect would be arrested. Such a structure, if positioned at L1, would also need to be 4 times the diameter of Venus itself. It would have to be assembled in space, which would require a massive fleet of robot assemblers. In contrast, increasing the speed of Venus's rotation would require tremendous energy, not to mention a significant number of impactors that would have to come from the outer solar system, mainly from the Kuiper Belt. In all of these cases, a large fleet of spaceships would be needed to haul the necessary material, and they would need to be equipped with advanced drive systems that could make the trip in a reasonable amount of time. Currently, no such drive systems exist, and conventional methods, ranging from ion engines to chemical propellants, are neither fast nor economical enough. To illustrate, NASA's New Horizons mission took more than 11 years to make its historic rendezvous with Pluto and the Kuiper Belt, using conventional rockets and the gravity-assist method. Meanwhile, the Dawn mission, which relied on ionic propulsion, took almost 4 years to reach Vesta in the asteroid belt. Neither method is practical for making repeated trips to the Kuiper Belt and hauling back icy comets and asteroids, and humanity has nowhere near the number of ships we would need to do this. The same problem of resources holds true for the concept of placing solar reflectors above the clouds. The amount of material would have to be large and would have to remain in place long after the atmosphere had been modified, since Venus's surface is currently completely enshrouded by clouds. Also, Venus already has highly reflective clouds, so any approach would have to significantly surpass its current albedo. That on a scale from 0 to 1 is worth 0.65 to make a difference. And when it comes to removing Venus's atmosphere, things are equally challenging. In 1994, James Pollock and Carl Sagan conducted calculations that indicated that an impactor measuring 700 kilometers in diameter striking Venus at high velocity would result in less than 1,000th of the total atmosphere. What's more, there would be diminishing returns as the atmosphere's density decreases.
which means thousands of giant impactors would be needed. In addition, most of the ejected atmosphere would go into solar orbit near Venus, and without further intervention could be captured by Venus's gravitational field and become part of the atmosphere once again. Removing atmospheric gas using space elevators would be difficult because the planet's geostationary orbit lies an impractical distance above the surface, where removing using mass accelerators would be time-consuming and very expensive. In the end, the potential benefits of terraforming Venus are clear. Humanity would have a second home. We would be able to add its resources to our own, and we would learn valuable techniques that could help prevent cataclysmic change here on Earth. However, getting to the point where those benefits could be realized is the hard part. Like most proposed terraforming ventures, many obstacles need to be addressed beforehand. Foremost among these are transportation and logistics, mobilizing a massive fleet of robot workers and hauling craft to harness the necessary resources. After that, a multi-generational commitment would need to be made, providing financial resources to see the job through to completion. Not an easy task under the most ideal of conditions. Suffice it to say, this is something that humanity cannot do in the short run. समझ गया ब्रो In the मैं future, the idea of Venus becoming our sister planet in every way. तो मतलब वही सही चीज़ है और ये इस बंदे का चैनल तुम देख सकते हो एंटोन पेट्रोव का मोटा बंदा है एक और बंदा भी यूट्यूब पे वो ब्लेंडर से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है अभी एक दो वीडियो बनाई है उसने लेकिन काफ़ी सही है उसकी जो भी वीडियो बनाई है उसने तो उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो काफ़ी सही है एंड उसे भी तुम चेकआउट करो भाई आगे बढ़ो इम्प्रूव करो भाई ह्यूमैनिटी का भला करो अपना ज़्यादा जियो तो ठीक है बाय बाय